Today is the first lecture. Today we will see ki Python say what are the things you can do. Okay. And before we learn any programming language, what are the basic things which we should know? We are going to learn all these things. Okay. So before I start the session, I will like to know about you all. Okay. We'll take an introduction session so that I can know from which field you are and all. Okay. So let me start first with the online guys. Okay. Yes, Pallavi, please introduce yourself. Hi, everyone. This is Pallavi. I am basically from Mumbai. I've been looking at shifting to Pune and hence found out about ITView and hence joined here. I am from a non-IT background. I have roundabout an experience of 17 years in different sectors. However, not in IT. IT was something that I was planning to get into, but then destiny has its own path. So it was not something that I could proceed further and went into customer service and back office and operations and all of that. Now that I'm taking a break, I decided to get into learning programming in Python. So you're just learning IT Python. Okay. Yes. Okay. IT. Correct. So you're doing front end and back end both, no? I'm currently doing front end and back end both. Yes. Okay. Okay, Pallavi. That's about it from me. Thank you. Okay. Tejasvi. Hello, ma'am. My name is Tejasvi. I am from Nashik. I have completed MCA and I have 2 years experience in website design. You've completed your? Sorry, ma'am. You have completed, you said what? Like padhai ho gayi aapki complete? MCA, master. MCA. Okay, computer application. Okay. Then आपने फिर कुछ काम work किया है? Yes, ma'am. Website designing किया. Website designing. Okay. So आपका field कौन सा है? Which course have you enrolled? Full stack Python? Front and back end both? Okay. Back end. Yes, ma'am. Okay. Pratibha, can you please introduce yourself? Hi. Hi, Krishna. Yeah, hi. Sorry, I joined late. No, I just started the introduction only now. Yeah. Yes. Yeah, my name is Pratibha Zadav and I'm working in Wipro. So, okay. Actually, in which semi-technical? Semi-technical. It's networking, but I want to switch to another. That's why I want to do this certification. Okay, fine. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Yes. So I'm Niharika. Okay. 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 Data analytics. Okay. So that's why Okay. So in the data analytics, you're looking for Tableau, Power BI, Python, and SQL. These 4 modules you're looking. That is your profile. Okay. So you'll be there with me for Python. Okay. Fine. Yeah. Okay. Okay. I wanted to enter in the IT field. Okay. Full stack have Python. So you are doing your front end now. Yes. Okay. Yes. Hi. Vaibhav. Okay. Pursuing engineering, 3rd year. Engineering, which one? IT. ENTC. Electronics and okay. In 3rd year. Okay. Cloud computing field. So okay. My sir had told me that Python is. It's a good start. It's like a first step you can go. Then you can go with cloud. Okay, fine. Yes. That's also going to have it. Yeah. I have put in my MSc 2017. MSc. Okay. After that, I done my own interior designer. Yes. So result I want to switch my right. Okay, so you're for data analytics now, right? Yeah. Data analytics. So Python, Tableau, Power BI, and all this. Okay. Yes. Hi. Yes. Okay. 21. 21. Okay.
from non-IT. Which field? मैकेनिकल इंजीनियर. ओके, देन आपने कुछ फिर और कुछ पढ़ाई मतलब और कुछ किया जॉब एंड ऑल डायरेक्टली? नो ना. ओके, सो मैकेनिकल में हो आप एंड फुल स्टैक के लिए देख रहे हो आप भी पाइथन में. ओके, ठीक है, फाइन. ओके, सो गाइस नाउ विल बी स्टार्टिंग. ओके, इन सम टाइम. फाइन, थिंक ऑल हैज जॉइन. वैष्णवी, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्वप्नाली. Okay. Okay, so now I'll be starting with the very basic stuff, okay, today. Since see, we all are from different background, okay? So I'm not going to consider anyone that you know coding, okay? So I'll be starting from that level only. Very basic only, everything, okay? So before we start any programming language, उसके पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए. ओके, तो वो थोड़ा सा देखेंगे आप बेसिक चीजें बिफोर आई एंटर इनटू पाइथन एंड टेल इट्स यूसेज एंड ऑल. और आज की सेशन से आपको थोड़ा सा एडवांटेज भी पता चलेगा कि पाइथन करके क्या क्या कर सकते, यू गेट थोड़ा सा आइडिया अबाउट इट. ओके, फाइन. सो फर्स्ट थिंग व्हेन आई टॉक अबाउट developing field or any programming language, the thing comes in our mind is we say what is software. Okay, we say what is a software, or you can say application. Okay, so what is a software or an application? Hannah, this is one question first. What is a software? We use software and applications nowadays, yes, and our life has become very easy with usage of application and all. You can book a cab, you can do anything. You can do many of your online transaction and everything you can do using a software or applications, correct? So when I say software application, it is something which is performing a task for you. Correct? What is a software? It is something which performs a task for you. Performs a task for you. A task for you. Now the task can be anything. If you are using a music player, it may be that okay, chalo, आप music play करने के लिए वो use कर रहे हो music player. अगर आप video player use कर रहे हो, it is playing some video for you. If you're using a Zoom application, it is helping us to interact. हर एक software का कुछ ना कुछ task होता है. Correct? It is something which performs a particular task for you. That is a software or an application. Okay. Now, have you ever thought like the applications which you are using, वो बनते कैसे हैं? कभी आया दिमाग में, सोचा कभी कि कैसे बनते हैं सॉफ्टवेयर? यू वुड लाइक टू, यू आर क्यूरियस टू नो हाउ आर दीज एप्लीकेशंस मेड एंड ऑल. एनी आइडिया हाउ आर एप्लीकेशन मेड और हाउ आर सॉफ्टवेयर मेड? एनीवन? हाउ आर सॉफ्टवेयर मेड? एनीथिंग? प्रोग्रामिंग, कोडिंग, करेक्ट. इट इज मेड थ्रू कोडिंग. कोडिंग एक वर्ड है, कोडिंग बोलते हैं. अभी वी विल लर्न व्हाट इज कोडिंग throughout our session, but today what is coding I will explain you basic thing. Coding is nothing but you can also call it as a source code. It is also known as a source code, or you can also call it as a programming. These are the different names. कोई इसको coding बोलता है, technical term थोड़ा सा और जाओ तो source code बोल सकते हो, या फिर you can call it as a programming, like that. These three other stuff. So here if I explain what is coding, coding is nothing but we say it is a set of instructions. It is a set of instructions to perform a particular task. What is coding? It is something which performs a particular task, but कुछ instructions के through वो task हो गया. Okay, now suppose if I want to give you some instructions, I would want कि आप लोग कुछ task करो. Maybe आपको मैंने वो एक simple mathematic question दिया कि चलो adding of two numbers. But when I am giving you this task, मुझे instruction देना पड़ेगा ना आपको कि पहले दो number लो and then you add and then you will get your sum. I want that, right? So for that I have to give you instructions, and the instruction should be in that language which you understand. Correct? So basically, if you would like to interact with the machine के साथ interact करना है, तो आपको एक language सीखना पड़ेगी. Correct? Now, if I want to interact with you, I should know normal common languages which all of us understand. Okay, then we can interact, then we can do communication. So वैसे ही we have to interact with the machine. So anyone has idea कि machine understands which language? Yes, machine understand this language. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? Binary बोलते हैं. It is known as what?
binary language. Now, is it possible for humans to learn this? Suppose I'm talking to you is hello 0101, maybe I'm saying hello, how are you or something. You will not understand. It's a binary language, no 0101. We will not understand this language. So for humans to understand the 01 wala binary language is impossible. But machine to understand this language only. How do I interact with this? Okay. So for interacting, you have something known as a programming language. This is something which everyone uses it to interact with the machine. Okay, programming language is something where you can write the code and it gets converted to what? Binary code. Binary बोलते हैं इसको, बाइट कोड भी बोलते हैं, कोई मशीन कोड भी बोलता है, अलग अलग नेम है. मशीन कोड मतलब बाइनरी ही होता है, नथिंग एल्स. ओके, सो ये लैंग्वेज जो होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पॉसिबल है. ह्यूमंस कैन लर्न दिस. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. You can learn a programming language, but these programming languages are converted to binary. This is what happens actually. Okay, so abhi agar aapko koi puchta hai machine understand which language, you will say binary language only, but we humans can't understand binary. That's why we learn something which is possible for humans, that is a programming language, and then we can interact with the machine, because at the end it is converted to binary code only. Okay, but see one more thing, like whenever you code, whenever you talk about this conversion now, code and binary code, who does it, what are the terms, this all we should know. Okay, so we have something known as like a translator. Yes, we have something known like a translator. Abhi I have written some code. Now that code needs to be translated to binary. Because machine को समझाना पड़ेगा ना, आप क्या instruction दे रहे हो, you have to explain the machine. So that will be done through the translator. So that translator name is nothing but compiler बोलते हैं इसको. Compiler एक term है, technical word है. Compiler is something, or you can say it is something, you know, which translates the code to binary. Okay, suppose simple example, no, like I want to interact with you and I know French. I'm from French. I want to talk to you in French only, but you guys don't know French. So I'll keep someone who understands French and English. We will translate. एक translator चाहिए होगा ना? वैसे ही compiler is something which translates the code to binary code. Compiler is that. Okay. But if your code is converted to binary code, you cannot just leave it to the binary code. उसको readable way तो बनाना पड़ेगा ना. Now see, आप लोग इतने सारे application use करते हो. Suppose you use an ATM machine. All of you uses ATM machine. So you get that message, no, readable message, enter the PIN. How do you follow the instructions? Because the instructions आपको समझ में आ रहा है. It is readable format. Enter the PIN, enter the amount. You enter and then you understand what it is. Correct? So you have to convert the binary code to readable also. This also should be done now. Otherwise, binary code, how the normal customer or client is going to understand while using. Abhi we are normal users of any application, we will not understand binary code. So there is one more term which is known as interpreter. Interpreter kya karega? It is going to convert the binary code to readable code. It will convert to readable code. Readable meaning any layman can understand. You don't need to be a developer or a programmer for using any application. अभी आप Google पे use करते हो, easily सबको समझ में आता है कैसे use करना, because वो readable में बना तो वो application programming से ही है. Programming करके binary में convert हो, but readable कैसे दिख रहा है? Interpret किया है ना उसको भी. Okay, so these are the things how it work actually. Because see, before you start any programming language ना, ये थोड़ा सा एक basic थोड़ा curiosity होनी चाहिए कि ये कैसे work करता है ना. So that's why we have to understand these compiler and interpreter are always there. Because देखो एक बार आपका practical start होगा, आप लोग code करोगे, run करोगे, backend पे क्या चल रहा है, we are not going to see binary code and everything. Take first lecture में थोड़ा idea होना चाहिए, क्योंकि what is compiler, what is translator. That's why we are just having a look at the simple stuffs first.
ओके तो अभी इसका ना एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको. सपोज मैंने एक प्रिंट करके एक मैसेज, दिस इज अ कोड एक्चुअली, पाइथन का एक सिंपल सा कोड मैंने लिखा है कुछ डिस्प्ले करने के लिए. ओके प्रिंट मीनिंग टू डिस्प्ले समथिंग एंड आई वुड लाइक टू डिस्प्ले अ हेलो. ओके तो ये एक कोड है. दिस इज अ कोड which a developer has written to perform a task of display hello. Now this code, it will get converted to what? Some binary code. Who will do it? Compiler will do it. After this, what it will happen? It will show in your display screen a hello, no? Which only human can understand. ये double code, ये round bracket, ये सब क्यों देना है? ये developer का काम है. जो coder है वो करेगा ये चीज. हम normal users, we will see only a hello. So who will do this? Interpreter. So see this flow. Whenever you write a code, this is the flow how it actually works. Any programming language you do, it's like that only. Bytecode and interpreter, everything works this way. Any coding language you learn, it's like that. Okay. So यहाँ तक समझ में आया आपको? Simple, just what is a software कैसे बनता है, what is a compiler and what is an interpreter. Is it okay till here? Yes. Clear? Yes. Right? Pallavi, Pratibha, Swapnali, Tejasvi, okay? यहाँ तक? Okay. Yes, ma'am. अभी हम लोग थोड़ा सा कैटेगरी देखेंगे. Then we will enter into Python because see whenever you learn any programming language we should know like uska ye kya hai, which category it is. We have to know that first, no? So for that reason we will see programming languages. Two levels actually we say. There are two levels of programming language. Okay, the first one is known as, first we call it as a low level. Okay, first is a low level, another one is the high level. We have a low level and a high level. See, abhi low level zyadatar na hardware purposely use hota hai. Okay, now see, you use any machine, we need a hardware software both, it works together. You cannot use only hardware, you cannot use only software. Software use करना है, hardware चाहिए, hardware use करना है, software चाहिए. We need both of them together. So hardware भी तो बनते हैं जिसमें circuits होते हैं. Have you seen some circuits anywhere in your laptop, in your mobile phones, in a washing machine or anywhere, small circuits, processors and all? They are built through this low level languages. Of course, we are not into this field now, but those who are from electronics and all, they have done this. Okay, ये थोड़ा सा low level सीखा होगा आप लोग ने, अगर जो लोग electric background से हैं. Assembly language करके एक होता है. This is just for your general knowledge, okay? We are not going into hardware programming, but this is just for general knowledge. कितने types है, आप क्या सीख रहे हो? That's why, okay? Assembly language, and we have one more which is known as a micro programming language. Okay? So these are something which is used for the hardware purpose. Hardware के लिए. तो अभी हमारा ये फील्ड नहीं है, हमें एक लैंग्वेज ऐसी सीखनी है जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर पे डील करे. सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, एनी टास्क करने के लिए आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही यूज करते हो. तो अभी सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज है. एक आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड, दूसरा आता है object oriented. Another one is object oriented. Okay. See, under the high level, you have two categories. One is procedure, one is object oriented. अभी ये दोनों ना मैं simple words में आपको बताती हूँ. ये दोनों ना तरीके हैं कोड करने के. Like it's just the way how you code it. See, suppose if I give you, suppose everyone we have done maths in our school level and college level. थोड़ा सा maths सीखा है आप लोग ने. तो what we do? We have different ways of solving it. You remember algebra and all? Used to do in school. So you're at कोई 10 lines में solve कर रहा है, तो कोई 5 lines में solve कर रहा है, कोई 8 lines में solve कर रहा है. Different ways से आप solve करते हो ना? Yes. So that you just understand कि okay एक shortcut method है, but shortcut method इतना clear नहीं होता जितना lengthy वाला method रहता है. Every steps you understand. So everyone has their own way to solve a problem. Okay, or you can say everyone has different way to talk. Some talk softly, some are very loud in speaking. Like that, different, no? So same like this, code करने के भी तरीके अलग-अलग होते हैं.
So ये दो तरीके हैं. These are the two ways of writing a code. Solving problem के दो तरीके होते हैं. एक प्रोसीजर होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. Okay, so in short, procedure oriented is nothing but line by line आप कोड करते हो बिना कुछ secured. You cannot hide your data. You cannot reuse the data. इसे line by line में आप करते हो. तो इतना इसमें वो नहीं रहता सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. इतना एडवांस लेवल नहीं है वो. ये वाला तरीका इतना एडवांस लेवल नहीं. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सा इतना सपोर्ट नहीं करता प्रोसीजर ओरिएंटेड. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं. हर एक को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. लाइक एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का अलग से एक एडिंग हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया. आप बड़ी सी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो दो तरीके हैं कोडिंग करने के. तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है द लैंग्वेज व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न व्हिच इज पाइथन, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होती है और हम क्या सीखने वाले हैं, कौन सा तरीका सीखने वाले हैं, या दोनों सीखने वाले हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, सो अंडर प्रोसीजर वी हैव सम लैंग्वेजेस लाइक सी. सुना है किसी ने सी के बारे में? मे बी हैव हर्ड. ओके, देन वी हैव पास्कल. ये सब पुरानी लैंग्वेजेस है, आजकल यूज नहीं करते ये पास्कल एंड फॉर्ट्रन एंड ऑल. वी डोंट यूज इट मच. ओके, देन वी हैव विजुअल बेसिक. ये जस्ट मैं ऐसे ही लिख रही हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या लैंग्वेजेस होती है. प्रोसीजर ओरिएंटेड में ये आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गया C++, जावा होता है, PHP होता है, फिर वी हैव समथिंग लाइक अ .NET. ओके, ऐसी कुछ लैंग्वेजेस हैं. बट हमें क्या सीखना है? पाइथन. तो पाइथन कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है? एनीवन, एनी आइडिया? अगर कुछ रिसर्च किया पाइथन के बारे में, वुड लाइक टू गेस किसके अंदर फॉल होता है पाइथन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, दिस इज करेक्ट. बट one more thing is Python falls in this also. Python is 2-in-1. This is one advantage. Python में आप दोनों वे से कोडिंग कर सकते हो, मिक्स करके कोडिंग कर सकते हो. You can use this way number 1, way number 2, both ways you can use. This is one advantage. This is the first advantage of Python, that it uses both the ways for writing the code. Okay, so Python uses both the ways for coding. Procedure oriented, POP, procedure oriented, and object oriented programming. No, that is Python. PHP भी fall होता है, but अभी PHP इतना नहीं है. There are some frameworks which work only on object oriented, but the famous one is Python, which falls under the both. See, इसमें फायदा क्या होगा? What will be an advantage? See, suppose if you know a C language, so C language में the code, the way you write a code is only procedure way, correct? If you would like to go with more advanced way, you have to learn the C++, another language. तो grammar वापस से सीखना पड़ेगा आपको to write. But in Python, you can do both the ways. So you know Python, you can write code in procedure oriented. You know Python, you can write the code in object oriented. Both the ways you can write. So for now, Python is only language which can follow both. ओके, ऐसे कुछ और भी लैंग्वेजेस है बट इतनी वेल नोन नहीं है. जैसे पर्ल करके एक लैंग्वेज है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव हर्ड. पर्ल है, रूबी है, सो लाइक कभी कभी सुना होगा. इट्स नॉट दैट फेमस. ओके, सो पाइथन इज द वन जो दोनों में फॉल होता है. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू लर्न प्रोसीजर बेस्ड स्टाइल आल्सो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आल्सो, एंड बोथ कंबाइन आल्सो. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इट. So that we'll do once we start the practicals part. Procedure and everything we will see. Okay, so now if anyone asks you Python is which category, you will say it is a high level and it follows both procedure and object oriented way of writing the code. Both the ways it follows. Okay, देख यहाँ तक ठीक है? Any question यहाँ तक? Is it clear? पल्लवी, तेजस्वी, प्रतिभा, स्वप्नाली, आप लोगों को समझ में आया ये वाला? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, ओके, ठीक है, फाइन. देन आई विल गो अहेड. Okay, so this slide we've already covered this one.
now we are going to see what is Python and Python के क्या-क्या features है, पहले ये सब हम लोग देखेंगे, okay? Just 1 second, just getting stuck. Okay, fine. अभी देखो पाइथन के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से व्हाई पाइथन इज इंपॉर्टेंट. ओके, like why do you opt for Python language? First of all, why Python? No, most of us we want to learn Python, but there must be some reasons why we want to learn Python. That is first thing. We'll discuss this now. हाँ, आप लोग बताओ कुछ. Why Python? You research something about Python? क्यों सीखना है Python अपन को? Python is popular. Okay. Python is a popular language. Okay. Okay, popularity कब आती है? Yes. Popular तब आती है when you can use in many of the fields. Python is a popular language which can be used in various fields. Can I say like a multi-purpose language kind of? बोल सकते हैं ऐसे? Multi-purpose, no? Learning one language can solve so many problems. So if you are a developer, later you would like to go for data science, later you would like to go for cloud, you can do like that. Okay, so Python सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डेवलपर ही बनना है Python से. पहले कैसे होता था? If you learn any programming languages, you are a developer. You have to go for coding only. You have to do developing only. It's like that. But after when Python came into the demand, it is something like, you know, it can do many of the tasks. If you are into some analysis field, you want to go for some gaming development, you would like to go for some cloud computing, you would like to go from AI, robotics, कितनी सारी चीजें आप Python के साथ कर सकते. Okay, but ये सब होता कैसे है? Python के पास बहुत सारी libraries है. Python has lots of libraries based on everything. It has many libraries for all the field. Okay, like even the scientists are using Python. If you research, Python is being used by the scientists, by the mathematicians as well. Why? Because Python के पास कुछ libraries already है जो ये सारी problem solve करके रखी है. आपको सिर्फ उसको use करके अपने usage के लिए देखना है. ऐसे. So this is one very important point about Python, which is not possible for all the languages. ऐसे है. अभी Java के through आप analysis करोगे, you'll go crazy learning Java because half of the time it is difficult to learn as like that. तो ऐसे रहता है. Python easy है सीखने के लिए, तो थोड़ा सा कैसे रहता है when you are in a difficult field, like you are into AI है ना, तो AI में थोड़ा सा mathematician सीखना पड़ेगा, ये सब, तो उसमें आप ज्यादा concentrate कर पाओगे, not कि learning in a language only, like that. So that's why Python is being used in many of the fields because it has many libraries. Okay. And one more point. It is very easy. It is easy to read and write. This is one thing everyone wants, no? We want कि कुछ थोड़ा easy हो. Okay. We want something कि थोड़ा easy तो हो सीखने के लिए. तो अभी जो भी आप लिखोगे, आपको नॉर्मल थोड़ा इंग्लिश जैसा ही लगेगा. नथिंग कि यू आर लर्निंग अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो कभी भी आप प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो ना, कीप दैट माइंडसेट दैट यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज. अभी व्हेन वी वर किड्स, when we in school and all, we learn English, no? Now in English we start everything with capital letter, we end with a full stop, we have a question mark. ये सब रूल्स है, ग्रामर है. वैसे ही पाइथन के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, बट इट इज कंपैरेटिवली इजी विद अदर लैंग्वेजेस. अगर आपने कोई और लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी है, तो आप कंपेयर करके आप देखो. और अगर नहीं भी सीखी है तो कोई बात नहीं. इट इज you can say it is a beginner friendly language. Beginner friendly meaning what? You are learning first programming language in your life, first time. It is beginner friendly language.
ओके, इट इज बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। मतलब कोई भी बंदा पहली बार कोडिंग कर रहा है, ही कैन स्टार्ट विद पाइथन। यू डोंट रिक्वायर एनी प्री रिक्वेस्ट। अभी जावा सीखोगे तो थोड़ा सा अगर आपको C++ की नॉलेज होगी तो अच्छा रहेगा। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन लर्न फ्रॉम द स्क्रैच ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। That's why the so many people from different backgrounds are learning Python. If you're not, if you haven't studied computer science also, you can learn Python. ऐसे है, अभी उसको क्राइटेरिया ही वैसे बना दिया Python. Okay, so these points are there, like which makes the Python little bit, you know, कि why Python? Obviously, we would want something easy हो, कुछ beginner friendly हो, multi-purpose हो. Then this is the reason why you should learn Python. Okay. My slide is, I don't know, something is wrong. Okay. So, 1 second, I'll just reopen the slide and show you one diagram. Okay, so this we have done. Now the diagram, which is this one, the next one, see. Can you see all of you the diagram? Yeah, देखो ये वाला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसके एग्जाम्पल के साथ बताया था ना, this part, no? So see here, this is a source code, no, hello.py. Now see .py, whenever you use a file, कभी भी आप लोग फाइल के साथ काम करते हो, जैसे .mp3 है, क्या टाइप की फाइल है? mp3 ऑडियो फाइल ना, .txt टेक्स्ट फाइल है, .xls इट्स एक्सेल फाइल। वैसे ही .py क्या होता है? पाइथन का कोड है उसके अंदर। सो हमें इससे फैमिलियर होना है कि आप कभी भी कोड करोगे पाइथन में, योर एक्सटेंशन विल बी व्हाट? .py। ओके, सो hello.py, ऐसी हेलो नाम दिया आपने फाइल का, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसमें आपका सोर्स कोड है, द सोर्स कोड विल बी कंपाइल्ड टू व्हाट? बाइट कोड, एंड देन वो इंटरप्रेट करके आपको हेलो वर्ल्ड या जो भी आपका मैसेज है वो प्रिंट करके देगा। ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि hello.py पाइथन का कोड है, और जो hello डॉट ये वाला जो रहेगा ना आपका बाइट कोड मतलब बाइनरी, उसका एक्सटेंशन क्या रहता है? डॉट क्लास। hello.py is your Python code. hello.class is your byte code or a binary code. Okay, so this is the flow. ठीक है, and then कुछ reasons हमने अभी discuss किया, easy to learn, no programming, beginner, expert, anyone can learn this. These are some basic reasons of Python. Okay, fine. Then this is something like beginner friendly syntax. अभी syntax क्या होता है? What is a syntax? Okay, see, आप कोई भी language सीखते हो, there is a grammar. Grammar को ही syntax बोलते हैं. Grammar is a syntax, where to give comma, where to give full stop, where to give capital letter, where to give a space. ये सब क्या है? Grammar है. So it is having a very beginner friendly grammar. Anyone can learn. That's why syntax meaning grammar. Understand that. Okay. And it was developed in the 1989 by this person Guido. See, most of you think that Python एक नई language है. Python पुरानी है. Python 2 वर्जन था उस टाइम पे, बट इतना उसमें फीचर्स नहीं थी, इतनी सारी लाइब्रेरीज नहीं थी, सिंपल एक उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल पे नहीं था, तो जावा वाज मच इनटू डिमांड एंड ऑल. इट वाज डेवलप्ड अर्लियर इन 1989, बट अभी इतना क्यों डिमांड में है? बिकॉज पाइथन हैज रियली अपग्रेडेड इटसेल्फ बाय क्रिएटिंग सो मेनी फील्ड्स, सो मेनी लाइब्रेरीज जो बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई द ईयर इज 1989. Because some of the candidates, they ask me like it is so old and then how it is so famous now, because of this reasons only. तो आप लोग कौन सा वर्जन सीखोगे? Python 3, 3.9 है, 3.8 है, जो भी लेटेस्ट है, we'll use that. Point that is different, but 3 रहेगा, not 2. Python 2 का syntax ही अलग, आजकल वो डिलीट हो गया, वो चलता ही नहीं है, Python 3 ही चलेगा. But 3 में जो भी वर्जन है, एटलीस्ट 3.5 के above हम लोग देखेंगे, 7, 8, 9, 10 जो भी है, we'll use that. Okay? Fine. ठीक है यहाँ तक. These are something which we have discussed. अभी और कुछ features देखते हैं Python के. Let's see some more features. It has predefined data structure. ये वाला जो point है data structure. Okay, now when we talk about data structure, simple words में
बहुत सारा डेटा आपको कहीं पे रखना है ऑर्गेनाइज फॉर्म में. ओके, लाइक सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और अ लिस्ट ऑफ employees, something like this. You would like to store it in a proper organized way. Organized way क्या होता है? जिसमें आप नया डेटा मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें आप डिलीट कर सकते हो, सॉर्टिंग फॉर्म में डाल सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसा टाइप का कुछ अरेंज, यू वांट समथिंग. तो पाइथन में देयर इज अ प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी सेट. ये सब टर्म्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं. ये पांचों टॉपिक्स के भी आप डिफरेंट चैप्टर्स ऑन इट. इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे. तो जावा पाइथन में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें आप डेटा स्टोर करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो. तो आपको अलग से डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है, वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो लोग ने कंप्यूटर साइंस किया उसमें रहता है, राइट, सो लेंदी प्रोग्राम्स, राइट, लेंदी बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होते हैं उसमें. तो अभी वो चीज नहीं करनी है आपको, क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ है. तो योर टाइम इज सेव्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आजकल सारे लैंग्वेजेस में ऐसे ही है, प्रीडिफाइंड एक बना के देते हैं, वही यूज करो, सो दैट आप अपने लॉजिक पे ज्यादा फोकस करो ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस डेटा स्ट्रक्चर स्टफ. ओके, तो ये सब जो अभी आपको दिख रहा है ना, लिस्ट, टपल, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, वी आर गोइंग टू लर्न दिस. ओके, फिर पाइथन पोर्टेबल है. पोर्टेबल मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इसका मीनिंग क्या है? सी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. Suppose you have written your code in Windows and you would like that code to run exactly in the Linux or in the Mac. ऑपरेटिंग सिस्टम पता है सबको, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, मैक होता है, अलग अलग ओएस होते हैं हर एक उसके. तो अगर आपको एक ओएस से दूसरे ओएस में शिफ्ट करना, आप इजीली कर सकते हो पाइथन का कोड. उसको बोलते हैं पोर्टेबल. पोर्टेबल मीनिंग मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो आपका जो भी कोड है वो आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, दिस इज वन फीचर. Another feature is extensible. अभी ये बहुत ही यूनिक सा फीचर है पाइथन में, extensible. Okay, listen carefully this feature. Suppose now I have some old project which is built in C or C++. C में है, suppose एक project है C में है. अभी मुझे उसको ना पाइथन में convert करके I want to carry forward that my project. C का कोड पाइथन में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए ना कुछ कंपाइलर्स आते हैं जो आपको लाइसेंस से बाय करने होते हैं. दोस कंपाइलर्स यू हैव टू बाय. बाकी पाइथन का फ्री है कंपाइलर, बट ऐसे कुछ कस्टमाइज चाहिए ना कि आपको सी से पाइथन में चाहिए या जावा से पाइथन में कोड कन्वर्ट करना है, तो आपको ना ऐसे कंपाइलर्स लगेंगे. एक होता है साइथन, साइथन CYTHON, दैट इज व्हाट इट कन्वर्ट सी टू पाइथन. ओके, this one we call it as Python. This is also one very nice feature about Python, but it is used rarely. If requirement is there कि कोई पुराने प्रोजेक्ट को पाइथन में कन्वर्ट करके you want to carry forward, then you use this. So see, Python is what? It is a compiler. Okay, it is a compiler which converts the C code to Python like this. Same like this we have for Java also. Jython ऐसे कुछ नेम है, you can see, but ये सब कुछ लाइसेंस रहते हैं. तो it is only used if the company have the requirement कि कोई भी कोड को कन्वर्ट करके कैरी फॉरवर्ड करना है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है? To extend that particular code and use it in that particular technology only, उसको बोलते हैं extensible. So this is also one feature which is not there in any other languages. Python इतना flexible है. Okay, so that's why this is extensible. आया समझ में extensible का meaning, all of you? Okay. Versatile. Versatile meaning what? It is adaptable. Python कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है. It's like अभी हमने डिस्कस किया ना, Python is used in so many this one field, data science, analytics, AI, कहीं पे भी. कैसे? क्योंकि वो अडेप्ट कर लेता है वो एनवायरनमेंट को. इसके लिए तो वर्सेटाइल मतलब है अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी मीनिंग स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. इट कैन अडेप्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. So that is versatile. So this is also feature of Python. Okay, फिर ना पाइथन में मेन चीज क्या रहती है? इजी तो है सीखने के लिए, बट ऐसे भी होता है कि लाइंस ऑफ कोड थोड़े कम लिखे जाते.
कोई लैंग्वेजेस में यू हैव टू राइट सो मेनी लाइंस ऑफ कोड इवन टू प्रिंट समथिंग। ओके, अभी ये चीज जो लोग ने थोड़ा सा कोडिंग किया वो आप कंपेयर कर सकते हो। किसी ने अगर सी जावा सीखा है मे बी इन योर कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, वॉइड मेन, कितना सारा कुछ लिखना होता है। मैं एक लिख के दिखाती हूँ कोड, इफ यू नो देन इट्स फाइन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अभी सी में किसी को कोड करना है, आपको ऐसे कुछ लिखना पड़ता है। वॉइड मेन, ये कर्ली ब्रैकेट्स रहता है ना, ओपन करो क्लोज करो, ठीक है, फिर प्रिंट लिखो, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। आई थिंक प्रिंट एफ है, राइट, प्रिंट एफ था ना, हाँ ऐसे कुछ रहता है। ओके, देन ऊपर में क्या क्या लिखना होता है, इंक्लूड। सो if he is a first time he is learning programming, he will get confused with the first line itself कि ये क्या है। करेक्ट, ये लाइन बोलेगा व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली अ लाइब्रेरी ओनली, वो इंक्लूड करना पड़ता है। तो अभी ये कोड सी में लिखा मैंने, अभी एक सिंपल मुझे मैसेज ही तो प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए मुझे 1-2-3 लाइंस ऑफ कोड तो लिखना ही पड़ा। बट ये चीज मैं अगर पाइथन से करूँ ना, सिंपल, आई विल जस्ट राइट दिस ओनली, दैट्स इट, हो गया। एफ नहीं है, प्रिंट है, नो सेमीकोलन आल्सो, दैट्स इट। दिस इज इन पाइथन, दिस इज इन सी। जावा का ये एक और लाइन ऐड होगा, इसमें क्लास बनेगी जावा में, जावा का और थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो ऐसे दिस इज इन सी एंड दिस इज इन पाइथन। तो आप कंपेयर करो लाइंस ऑफ कोड। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो विच वन विल बी बेटर? पाइथन विल बी बेटर ना, बिकॉज इसमें हमें इतना कोडिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा जितना हम अपनी प्रॉब्लम में ध्यान दें कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। So that's why Python is used in big complex problems like AI, machine learning, robotics, ये सब में। तो इसमें क्या होता है, ये वाली लाइन, solve the complex problems in less time with fewer lines of code। जो टास्क को आपको 4-5 लाइन लग रही है, पाइथन में 2 लाइन से हो जाएगा, 3 लाइन से हो जाएगा, ऐसे। That is one feature of Python. Getting it? Understanding? Okay, this side, Tejasvi, Pratibha, Pallavi, okay? Yes, Yes. ma'am. This point? Okay, fine. Fine. फिर आता है डायनेमिक डेटा टाइप। अभी देखो डेटा टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा। अभी आप जब कोड करोगे, यू विल वर्क विथ मेनी वैल्यूज, कोई नंबर होगा, किसी का नाम होगा, कुछ डेसिमल नंबर्स होंगे, अलग अलग टाइप का डेटा रहेगा। समथिंग लाइक डेटा टाइप्स बोलते हैं उसको। डेटा टाइप मीनिंग टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो सपोज अगर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे बाकी ऐसे सपोज सी में कैसे रहता है ना, अगर मुझे 10 एक वैल्यू है, मुझे स्टोर करना, आपको ऐसे लिखना हो, इंट मतलब इंटीजर नंबर, INT इज व्हाट, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म। तो ये सी में ऐसे लिखते हैं। बट अभी नॉर्मल एकदम इजी लैंग्वेज में सीखना है, पाइथन में क्या लिखो ये, तो इसमें क्या लिखा मैंने, 10 की वैल्यू ए में स्टोर है, बस हो गया, नो INT नो नथिंग, यू डोंट राइट ऑल दोस। डायनेमिक डेटा टाइप है, ऑलरेडी डेटा टाइप इज देयर पाइथन में, यू डोंट हैव टू राइट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं है, यस वी हैव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मीनिंग द टाइप ऑफ डेटा, वी हैव INT, वी हैव फ्लोट फॉर डेसिमल, ये सब है, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो अपने कोड को जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश करता है पाइथन। ये सब ध्यान में रखते हुए इस लैंग्वेज का ग्रामर बनाया गया है कि कोई भी दूसरे फील्ड से हो या एनीथिंग, दे कैन लर्न दिस इजीली। यू डोंट नीड एनी प्री रिक्विजिट, मतलब पहले से कुछ आना नहीं चाहिए उसके लिए। इसी ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पाइथन बना है, उसका ग्रामर। ओके, सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक डेटा। डायनेमिक मतलब और इट्स देयर, ऑटोमेटिकली लेता है, आपको देना नहीं है, खुद से नहीं देना है, यू डोंट हैव टू गिव इट ऑन योर ओन। सो वी से डायनेमिक डेटा टाइप। ओके फाइन। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था ना कि पाइथन में हाई लेवल है, लो लेवल है, सॉरी इट इज अ हाई लेवल, इट इज अ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये डिस्कस किया था ना, प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो दोनों के फीचर्स कैसे आए, पाइथन ने डिराइव किए हैं। पाइथन कोई ऐसी सोल लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ डिराइव्ड लैंग्वेज। वी से पाइथन इज व्हाट, डिराइव्ड लैंग्वेज। उसने कुछ फीचर सी से लिए, कुछ फीचर जावा से लिया, कुछ फीचर C++ से, ऐसे मिला के उसने एक अपनी लैंग्वेज बनाई पाइथन में। सो पाइथन एक डिराइव्ड लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई इतनी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस डिराइव करके इट्स लाइक 2-in-1 काइंड ऑफ बनाया उसने। इसलिए वो प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी कर सकते हो, ऐसे।
Okay, so these are some basic features of Python. देख लो एक बार, read कर लो. Any doubt in this, any of the points? Is it clear? Just come on, read. Okay. Is it okay till here, all of you? Yes. Yes. Okay. Then, yeah, these points which we have already seen. Portable ना, portable मतलब independent platform. It's like write once, run anywhere. एक बार कोड लिखो and कहीं पे भी चलाओ, कोई भी OS में चलाओ. Windows में कोड लिखा है, you can run it Linux, Mac, anywhere. Okay? फिर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. अभी देखो जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो, यू राइट 10 एनी वैल्यू. जैसे अभी एक लाइन मैंने यहाँ लिखा ना, a equal to 10, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना. इट गेट्स स्टोर इन सम मेमोरी. So that is done by the Python automatically. You don't have to allocate any memory. Okay, this is one thing, automatic memory management. C++ में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, वो करके आपको कुछ मेमोरी बचानी होती है. बट पाइथन में ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है. एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली. हमारा मेन काम जस्ट रहेगा कोड करना और लॉजिक पे ध्यान देना. ये मेन काम रहेगा. ओके, एंड यस ऑफ कोर्स इट हैज अ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. दैट इज द रीजन व्हाई पाइथन इज मल्टीपर्पज. करेक्ट. एंड इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. जब हम लोग बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स, आपको क्या लगता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? यूज लाइक मॉडिफिकेशन कर सकता है. ओके, देखो सबसे पहले फ्री मीनिंग इजीली आप सॉफ्टवेयर मिल जाएगा. आपको सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस देने की जरूरत नहीं. डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, वर्क करो. दैट इज वन थिंग फ्री. ओपन सोर्स का मीनिंग है कि अगर आपको खुद का कुछ कोड अपलोड करना है, अपनी खुद की लाइब्रेरी आप बना सकते हो पाइथन में. दैट इज ओपन सोर्स. तभी तो इतनी सारी लाइब्रेरीज बनी है, क्योंकि पाइथन ने इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि जो लोग एनालिसिस या फिर डेटा साइंस है, वो लोग अपनी लाइब्रेरी बना के अपलोड करते हैं, क्योंकि उनका फील्ड अलग है. मैथमेटिशियंस लोग करते हैं. तो इतनी सारी लाइब्रेरीज कैसे बनी? बिकॉज ये ओपन सोर्स है इसके लिए. तो अगर आपको खुद का कुछ बना के अपलोड करना है लाइब्रेरीज, यू कैन यूज पाइथन फॉर दैट. दैट्स व्हाई जब हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स का मीनिंग है कि आप अपलोड कर सकते. C++ नहीं है. इवन जावा इज नॉट. जावा भी और स्ट्रिक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ ऑरेकल ने जावा को ले लिया और स्ट्रिक्ट हो गया है. उसमें अभी आजकल लाइसेंस आने लग गया फ्रीली. न्यू वर्जन्स के लिए यू कैन डाउनलोड फ्रीली, ऐसे है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स. ठीक है. फिर कौन सी कंपनी यूज करती है पाइथन? देखो, यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द कंपनीज व्हिच यूजेस पाइथन. गूगल, ड्रॉपबॉक्स, यूट्यूब, याहू, नासा. नासा कोई आईटी कंपनी है क्या? It is using Python, no? So you can see the flexibility of Python. Okay, it is like really flexible. Mozilla, Instagram, Facebook. अभी देखो इनमें से क्या है ना, सारी कंपनीज ने पाइथन को अभी अडाप्ट कर लिया है. दे आर ट्राइंग टू डेवलप देयर एप्लीकेशंस इन पाइथन. बट एक इसमें से एक कंपनी ऐसी है
जो स्टार्टिंग से लेके पाइथन में ही बना है एकदम स्क्रैच से, which is Instagram. Instagram is a web-based mobile application. No, it's a web-based mobile application. So Instagram जब बना था उसने पाइथन से ही स्टार्ट किया और इसमें एक फ्रेमवर्क यूज हुआ है, वो है Django, जो वेब एप्लीकेशन के लिए लगता है। पाइथन के साथ जो दूसरा लेवल है जो लोग डेवलपिंग में जा रहे हैं वो है Django। तो उसके थ्रू इंस्टाग्राम बना। यू कैन रिसर्च विच टेक्नोलॉजी वाज इंस्टाग्राम मेड, क्योंकि हम लोग यूज तो करते हैं ना इंस्टाग्राम, यू कैन फाइंड आउट कैसे बना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। सो पाइथन विद Django में बना है। एंड इंस्टाग्राम इज नॉट दैट ओल्ड, 8-9 years 10 years इतना ही हुआ होगा, करेक्ट। सो इट इज बीइंग बिल्ट इन पाइथन Django फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेसिक ओनली। बाकी फेसबुक है ना इसमें नहीं बना पाइथन में, बट उसने अभी अडेप्ट कर लिया कि अभी बहुत सारे एप्लीकेशन पाइथन में बनते हैं। यूट्यूब में जैसे आप कुछ सर्च करते हो, लाइक अ सर्च इंजन जैसा, अभी यूट्यूब हुआ या नेटफ्लिक्स हुआ, आप क्या करते हो व्हेनेवर यू वॉच एनी सीरीज, या फिर अगर आप कुछ टाइप करते हो सीरीज में, तो नेक्स्ट टाइम आपको वही सीरीज का पॉपअप आता है कि प्लीज वॉच दिस, मतलब ऐसे कुछ आता है। कैसे? बिकॉज उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है कि आप जो भी टाइप करते हो वही वाली चीज बार बार आती है फिर आप। दिस ऑल आर AI। फेसबुक में भी वैसा ही है। ओके सो ये सारी कंपनीज ने पाइथन को अभी अडेप्ट कर लिया। ऐसे दीज आर सम, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, मैंने जस्ट पॉपुलर कंपनी के नाम बोले। ओके ठीक है, अभी पाइथन करके आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू विद पाइथन। तो कुछ कुछ फील्ड्स देखते हैं, पॉपुलर फील्ड्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट फील्ड वेब डेवलपमेंट। ओके सो दोज हु आर डूइंग वेब डिजाइनिंग, उन लोग के लिए वेब डिजाइनिंग एंड पाइथन बुक, फ्रंट एंड बैकएंड। ये वेब डेवलपमेंट से आप क्या अचीव करो, यू विल बी एबल टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर कुछ टिकट बुक्स करना, वो ऑनलाइन होता है ना, आप बुक करते हो, डेटाबेस, एवरीथिंग डेटाबेस रहेगा, एवरीथिंग। तो वेब डेवलपमेंट में आप ये चीज करोगे। जो लोग वेब डेवलपमेंट पूरा करते हैं उसको बोलते हैं फुल स्टैक पूरा। तो उसके लिए ऐसे ये आपको क्या सीखना है, देखो पाइथन आप सीख लोगे, बट पाइथन के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज व्हाट यू नीड। तो इसमें आता है Django, वेब डेवलपमेंट में आता है ये Django है, फ्लास्क है, ये सब। तो आपको Django सीखना है बिकॉज Django इज द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क यूज, इसी में ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो जो लोग वेब डेवलपमेंट के लिए है उसके लिए ये वाला फील्ड है। आफ्टर पाइथन गो फॉर दिस, आफ्टर लर्निंग द पाइथन। ओके दोज हु आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग फील्ड। फिर आता है डेटा एनालिसिस, दोज हु वांट टू गो फॉर डेटा एनालिटिक्स। अभी डेटा एनालिटिक्स अलग अलग वे में होता है। कोई लोग डेटा एनालिसिस के बाद दे वांट टू गो विद द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में बहुत बड़ा फील्ड है, डेटा साइंस वेरी वास्ट फील्ड। ओके बट यू कैन स्टार्ट विद एनालिसिस। तो एनालिसिस में आपको कुछ लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी जो आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। आफ्टर पाइथन व्हाट्स नेक्स्ट, यू कैन लर्न लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas, ये सब लाइब्रेरीज है पाइथन में। डेटा एनालिसिस का ग्राफ दिखाना, ओके पाई चार्ट बनाना, जो लोग एनालिसिस में जा रहे हैं यही सब। फिर इसके साथ एड ऑन के लिए आप अलग अलग कुछ टूल्स पे काम कर सकते हो। ये लॉजिक से यू कैन यूज सम टूल्स लाइक पावर बीआई हो गया, W हो गया, कैसे यूज कर रहे हैं वो सब आप सीखोगे W एंड ऑल में ऐसे। बट पाइथन विल बी लाइक यू नो स्टेप फॉर यू टू गो अहेड लाइक दैट। तो ये डेटा एनालिसिस में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए। तो आपको एक बार पाइथन आने के बाद लाइब्रेरी सीखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको कोड आ गया करने, थोड़ा सा फ्लो मिल गया, तो लाइब्रेरीज आप खुद से भी करके कर सकते हो। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं अलग अलग काइंड ऑफ। जैसे एक्सेल में फंक्शन होता है ना, सम, एवरेज, ऐसे काइंड ऑफ फंक्शंस रहेंगे बहुत सारे। आपको बस फंक्शन रिसर्च करना है, कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, क्या वो आपकी चीज यूज कर पा रहा है। फिर आपको अपना खुद का लॉजिक लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हो बिकॉज यू हैव लर्न पाइथन। कोई भी चीजें रिपीट करनी है तो उसके लिए लूप्स कंसेप्ट सीखोगे, कोई भी कंडीशन लगानी है उसके लिए इफ एल्स सीखोगे। सो दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन पाइथन, then you can use with your libraries. Okay, ठीक है। So this is what you're going to see. Then machine learning AI, जो लोग robotics and all में जाना चाहते हैं, ML and all, for that you can see. But ये थोड़ा सा कैसे होता है, फ्रेशर लेवल के लिए नहीं है। वंस एक बार आप थोड़ा सा डेवलपिंग कर लो एंड ऑल, फिर आप ML में जा सकते हो फॉर योर आगे की ग्रोथ के लिए। रिसेंटली अगर आपको डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड लाइक डायरेक्टली एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हो मशीन लर्निंग के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है मिलना। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए डेवलपिंग एंड ऑल में, लॉजिक्स एंड ऑल बने, फिर आप ML
AI कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पाइथन है ना। तो इट्स लाइक देखो पाइथन सीख के ना एक आपका स्टेबिलिटी आ जाती है कि चलो पाइथन है, फिर आगे आगे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। You after developing you can go with cloud, you can go with this, ऐसे करके रहता है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। तो इसके लिए भी कुछ लाइब्रेरी, हर एक के लिए ना अलग अलग लाइब्रेरीज है। NLTK, TensorFlow, skitlearn, ये सब कुछ लाइब्रेरीज आपको सीखनी पड़ेगी if you want to go for the ML machine learning, Python with ML, Python with data analytics, ऐसे अलग अलग फील्ड्स होते हैं। ओके, दिस इज वन फील्ड। Then we have testing field, ये writing script meaning what testing, जो लोग testing में हैं they test the software ना। ऑटोमेशन सुना है, अगर सुना है ऑटोमेशन करके एक रहता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना, उसमें आप यूज कर सकते पाइथन, यू कैन यूज फॉर दैट आल्सो फॉर टेस्टिंग। ओके, देन वी हैव डेस्कटॉप GUI डेवलपमेंट। अगर आपको कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, सपोज यू वांट टू मेक कैलकुलेटर और समथिंग, ये वाला हमारा इंक्लूडेड रहेगा पाइथन में। दिस इज लाइक वी आर जस्ट एडिंग दिस स्टफ सो दैट एक थोड़ा सा ऐप बना के देखो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के साथ आप कुछ एप्लीकेशन तो बनाओगे ना। दिस इज ओनली दोज हु आर डूइंग ओनली पाइथन, उनके लिए हम लोग ये सब करेंगे। बट जो लोग वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो वेबसाइट होगी आपकी पूरी, आपको वेबसाइट बना के करना है Django के साथ। बट फॉर द पाइथन वी हैव इंक्लूडेड दिस स्किंटर करके एक है, उसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे, तो सर जो भी आपने सीखा है लॉजिक्स वो सब अप्लाई करोगे उसमें, तो छोटे से एप्स 2-3 एप्स बनाओगे आप उसमें, तो एक आइडिया हो जाएगा पूरा पाइथन सीखने के बाद आपने कुछ डेवलप किया ऐसे काइंड ऑफ। ओके, सो दैट विल बी आल्सो दैट। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डेस्कटॉप जैसे बटन बनाना, थोड़ा सा डिजाइन बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे कुछ आप डिजाइन करोगे इसमें। ओके, सो ये सब कुछ पॉपुलर फील्ड्स है। और भी फील्ड्स है इसमें, लाइक अगर आप इसमें जाना चाहते हो, डेटा माइनिंग होता है एक, फिर उसके बाद इफ यू वांट टू गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग दैट आल्सो यू कैन गो आफ्टर पाइथन। बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेगी। आफ्टर लर्निंग पाइथन व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू। तो मेन थिंग इज एक बार आप पाइथन सीख लो, फिर आपके लिए बहुत सारे वो ओपन हो जाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है। सो इट्स ऑलवेज एन एड ऑन टू योर रिज्यूम, लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट। आपके करियर में एक एड ऑन होगा पाइथन सीख के। ओके, दिस इज वन स्किल यू हैव एडेड। ठीक है यहाँ तक? ओके, फाइन। अभी कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? Now one more thing, why the name of Python is Python? Python is a sneak name, no? इसका नाम ऐसे क्यों रखा है ना? Just a story behind it. There is Python का नाम Python इसलिए है because of the person who developed Django. ऐसा कुछ रीजन नहीं है, like there is nothing technical reason कि कुछ कोडिंग रिलेटेड है या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीजन बस यही है कि he was a fan of the series, okay? Monty Python's Flying Circus करके कॉमेडी सीरीज आता था उस टाइम पे, तो उसने वो कीवर्ड ले लिया Python and he put the name Python, और कुछ नहीं। This is one article I've given, I will share this, you can read it. इसके पीछे उसका नाम Python है और कोई टेक्निकल रीजन नहीं है कि why it is Python related to coding, ऐसा कुछ नहीं। ओके, इवन जावा का भी एक वो कॉफी सिंबल रहता है बिकॉज एक कॉफी बीन के पीछे उसका नाम रखा था। तो देयर इज, ऐसे जब लैंग्वेजेस बनते हैं तो वो लोग ऐसा कुछ टेक्निकल रीजन नहीं देखते हैं, ये सब रीजन ही रहते हैं। सो पाइथन इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। फिर ओके, देन कुछ डोमेन्स हैं जो हमने डिस्कस किए, क्या क्या कर डोमेन्स जहां जहां पे पाइथन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में टेस्टिंग, डेवलपिंग, मैथमेटिशियन, डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, इवन फाइनेंस बैकग्राउंड में आजकल यूज होता है। अभी जो एडवांस एक्सेल है ना, अभी वो धीरे धीरे अभी अगर जिसको कोडिंग आती है उसके थ्रू आप कर सकते हो। नेटवर्क इंजीनियर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, यू कैन यूज, दीज आर द डोमेन्स वेयर यू कैन यूज। ओके, एंड क्या क्या टाइप की एप्लीकेशन बनाते हो वो हमने अभी देखा ही, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग इज फॉर द टेस्टिंग, डेटाबेस, गेम, डेस्कटॉप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी रहता है। दिस इज आल्सो रिलेटेड समथिंग विद एआई ओनली, IoT करके रहता है एक फील्ड, ये भी आप कर सकते हो आफ्टर लर्निंग पाइथन, दैट्स योर नेक्स्ट लेवल, लाइक दैट। ओके, so this is the theory which we do in the first lecture, what is Python and what are different kinds of fields we have. Got the basic understanding, all of you? Pallavi,
Pratibha, Tejasvi, got the basic understanding of what is Python and all? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Fine then. Ma'am, आज क्या कर, हाँ बोलो. I have one question Yes. that Yeah. you told that after learning Python, we can go with the domain you show us here. So we have to do a course for that, or after Python, we can directly go with that. See, it depends on what you have chosen. Like, see, most like Pratibha, आपने शायद आपका web designing full stack वाला है, तो आप developing field में हो, so you'll be under the software engineer domain. Okay, Yeah. it depends on what you want to do, like that. अभी जो लोग मैथ्स में है, मैथ्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग भी यूज करते हैं डोमेन्स जहां जहां पे पाइथन यूज होता है. ओके, जो लोग ने थोड़ा सा ये किया है, कॉमर्स रिलेटेड है या एमबीए रिलेटेड है, वो लोग एनालिसिस करते हैं. ऐसे अलग अलग फील्ड है, लाइक दैट. पाइथन के साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. ओके, Yeah. ठीक है.